Welcome students to the new session of work, power and energy. Okay, the first topic which we'll start today is very important and you can give the heading relationship between kinetic energy and momentum. Relationship between kinetic energy and momentum. Relationship between kinetic energy and momentum. So, getting relationship between kinetic energy and momentum. काइनेटिक एनर्जी को हम ई लेटर से डिनोट करते हैं एंड मोमेंटम is denoted by letter P. So this is a very important relationship. This relationship help us in solving a good number of questions. As we know that kinetic energy is given by half mv square and momentum is given by mv. अब इस इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई m on both sides. तो हमें मिलेगा m equal to half m square v square. तो इसको लिख सकते हैं आप 2m equal to p square. और ये मैं राइट इट p square equal to 2m. इसको आप नोट करिए. If you are done with it, अब देखिए अगला पॉइंट हम आप देखिए यहाँ पे P का जो पावर है, यहाँ P का जो पावर है वो 2 है. हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 into परसेंटेज चेंज इन P और E का पावर देखिए 1 है इक्वल टू 1 into परसेंटेज चेंज इन P. तो अप टू 7% आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. अब जैसे आपको कहा गया कि परसेंटेज चेंज इन P मान लीजिए 2.5% है, तो परसेंटेज चेंज इन E कितना होगा. यहाँ देखिए परसेंटेज चेंज की वैल्यू रख दीजिए. ये 2.5 है
2.5 into 2. So the answer is very simple. The answer is 5. तो अप टू 7% आप इस तरह के परसेंटेज चेंज को ले सकते हैं. But beyond 7% you cannot do by this method. तो अब 2 क्वेश्चंस हम करेंगे, तो आपको बताते हैं. Okay, you have noted down. This is p square equal to 2me. P square equal to 2me. This you must highlight, and this should be also highlighted. तो ये कंसेप्ट आपको बड़ा ध्यान रखना है. ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. 2 क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. If mass of body remains same, if mass of body remains same and its momentum is increased by 50%, find the percentage change. Find the percentage change in kinetic energy. देखिए, आप ऐसे लिखेंगे E 2me equal to E square. अब आपको E में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो सबसे पहले वेरिएशन फॉर्मूला डेवलप करिए और डायरेक्ट लिखिए. हमेशा ध्यान रखिए 1 परसेंटेज चेंज इन E सीख जाएंगे आप. P2 square minus P1 square upon P1 square into 100. अब P1 था इनिशियल 100, उसमें चेंज हुआ 50%, तो ये हो गया 150. तो यहाँ पे रखते हैं आप 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 100. फिर आप यूज करिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 150 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 150 प्लस 100 इंटू 150 माइनस 100, और एक 100 तो कैंसिल हो गया. ये देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया. तो अब हमें मिला ये 250 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100. 2 जीरो है, कैंसिल कर दीजिए. So the answer is 125%. 125%. P1 इनिशियल मोमेंटम है और P2 फाइनल मोमेंटम है. आप जिस बॉडी में भी परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं, तरीका ये है, ये पावर कितनी होनी चाहिए 1. तभी आप लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन E. Then only you can write
this formula. So our answer is 125%. If you are done with it, तो आप मुझे बताइए कि आपने इसे कर लिया है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. इसको सीखिए, रिवाइज करिए. Okay, so I am moving to the next slide. Question number 2. If mass of a body is constant and its kinetic energy is increased by 44%, then find the percentage change in momentum, in its momentum. फॉर्मूला तो आपको मालूम है, p square equal to 2m, मास कांस्टेंट है, so p square is proportional to e. अब देखिए p का पावर कितना है, यहाँ पर देखिए 2, तो हमें p का पावर 1 करना पड़ेगा. कैसे? रूट ले लें. अब हम लिख सकते हैं, what we can write, percentage change in t equal to root of e2 minus root of e1 upon पावर रूट है. अब e1 को आप ले लीजिए 100, इंक्रीज हो गया है 44%, 100 प्लस 44. अगर डिक्रीज होता तो हम माइनस करते. रूट 144 रूट 100 into 100, 12 minus 10 upon 10 into 100. ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. 12 minus 10 2 होगा, 2 into 10. The answer is 20%. Yes, up to 7% means 0 to 7. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एप्लीकेशन से करना चाहेंगे.
ओके, तो आज की दूसरी हेडिंग हम लिखते हैं इलास्टिक collision. Perfectly perfect elastic collision. अब देखिए, consider two bodies of masses m1 and m2 as shown. और हमने सपोज करा let v1 is greater than v2, तो क्या होगा? They will collide undoubtedly, क्योंकि पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है. And after collision what will happen? Let their velocities are v1 and v2. और थोड़ा इसमें हमें सुधार करना चाहिए. It should be taken as u1 and u2. So u1 and u2 velocity before collision. Velocities before collision. v1 and v2 velocities after collision. Head-on collision कहलाता है ये, head to head. Important है. Head-on one-dimensional collision. अब देखिए, it is better that you should remember this formula. v1 is given by m1 minus m2 upon m1 plus m2, इसे याद रखना है, into u1 plus 2m2 u2 upon m1 plus m2. v1 is the velocity of body after collision, first body. अब आप v2 को याद रखिए, m2 minus m1 upon m1 plus m2 plus 2m1 u1 upon m1 plus m2. So note it down. We have a very simple cases in the examination for elastic collision. अब कुछ collision की properties है, उसके बारे में आप लिखिए. Are you done with this? Imperfectly elastic collision
First point, momentum is conserved. Energy is conserved. Relative velocity before collision is equal to minus of relative velocity after collision. That means they are in opposite direction. तो ये देखिए, ये हम आपको थोड़ा क्लियर करके बताते हैं. M1, U1, M2, U2. The collision takes place and they get separated. M1, V1, M2, V2. Momentum is conserved. So we can write M1, U1 plus M2, U2. मालूम होना चाहिए. कॉलिजन के पहले का मोमेंटम कॉलिजन के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा. एनर्जी इज कंजर्व्ड हाफ m1 u1 स्क्वायर. आपको ये मालूम होना चाहिए. हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कॉलिजन. और तीसरा u1 माइनस u2, ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू माइनस ऑफ v1 माइनस v2. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा इक्वेशन आता है. u1 v1 इक्वल टू u2 प्लस v2. इसको जरूर याद रखिए. टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कॉलिजन. और इसमें अब चौथी प्रॉपर्टी भी है जो हम करने जा रहे हैं. ये आपने नोट कर लिया. चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ कोलाइडिंग bodies have equal masses, have equal mass, then after collision they will interchange their velocities.
जैसे देखिए ये 2 kg है, ये भी 2 kg, इसका वेलोसिटी है 6, इसका वेलोसिटी है 4। कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, जो पहले इसकी थी 6 अब इसकी हो जाएगी, इसकी थी 4 अब इसकी हो जाएगी। लेकिन ये तभी हो सकता है जब उनके मासेस क्या हो, ओनली व्हेन m1 इक्वल टू m2। So they will interchange their velocities। ये बिल्कुल क्लियर है। एक और एग्जांपल करते हैं इसमें। ये सब तभी एप्लीकेबल होगा जब वेलोसिटी सेम होगी। मान लीजिए 4 kg है, it is moving with velocity 10 meter per second and there is another 4 kg at rest, so they make collision। after collision क्या होगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ओके, तो आपने इसे नोट कर लिया। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। A ball of mass m moving with velocity v makes a head-on elastic collision with a ball of same mass। देखिए मास सेम है, moving with velocity 2v towards it, taking direction of v as positive, then velocities of two balls after collision will be minus v 2v, second answer 2v minus v, third answer v minus 2v, fourth answer minus 2v and v। आपको करना है, दिस इज अ पोल क्वेश्चन।
आपको 30 सेकंड अलॉट किए जाते हैं. ओके, यू कैन टेक 40 सेकंड. चैट विद मी द आंसर. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम. सेम मास 2v. ये पॉजिटिव हो गया और ये डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. एक बच्चे का आंसर आया, सिर्फ एक. इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी. -2v and v. Next. This is a very good question. Interchange of velocity. पहले का वेलोसिटी v था, वो बाद में कॉलिजन के बाद दूसरे का हो जाएगा. और पॉजिटिव नेगेटिव से हम बता सकते हैं, ये हो गया -2v और ये हो गया v. और ऐसा भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट डाउन दिस वे आल्सो. ओके, लेट्स मूव टू द. अब कंबाइंड बॉडी का केस होता तो नॉन इलास्टिक कॉलिजन होता. अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन. A body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body at rest and continues to move in the original direction with 1/4 of its original speed. The mass of second body which collides with the first body is 1.5 kg. तो सिर्फ फॉर्मूला मालूम होने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. मान लीजिए इसकी वेलोसिटी भी है
और ये दूसरी बॉडी का मास है m, वो रेस्ट पर है। कॉलिजन के बाद, आफ्टर कॉलिजन, तो इनमें कॉलिजन होता है, ये में का कॉलिजन, ओके। आफ्टर कॉलिजन के बाद ये 2 kg का जो वेलोसिटी है कितना हो गया, v/4। और सेकंड बॉडी का वेलोसिटी हमें नहीं दिया, पर ये दिया हुआ है। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u1 इक्वल टू v, u2 इक्वल टू 0 एंड v1 इक्वल टू v/4। v1 इक्वल टू v/4। तो सबसे पहले आप उसको ये भी तो देखेंगे कि गिवन कंटेंट्स क्या है। तो v1 का फॉर्मूला लगा देंगे, v1 का फॉर्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो v1 तो हमें मालूम है कितना है, v/4। थोड़ा यहाँ हमें स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। लेट्स डू लाइक दिस, v/4, m1 है 2, m2 निकालना है, 2 माइनस m, 2 प्लस m, और u1 है v, और ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो अब हमें अगली स्लाइड पे जाके ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इतना आप नोट कर लीजिए। Then we'll solve in the next slide। देखिए फॉर्मूला मालूम होने से कुछ नहीं होता, वह प्रैक्टिस की जरूरत है। तो if you are done with it, you can tell me कि आपने इसे कर लिया है। ओके, तो यू हैव नोटेड डाउन। अब देखिए अगले स्लाइड में जा रहे हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे। v/4 इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 2 प्लस m इंटू v। v तो कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन 4 इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 2 प्लस m। 2 प्लस m इंटू 1, 2 प्लस m, 4 इंटू 2 माइनस m। तो 2 प्लस m इक्वल टू 8 माइनस 4m, 5m इक्वल टू 6, m इक्वल टू 6/5, 1.2 kg। So correct answer is B। तो ये बड़ा आसान हो गया। आप उस फॉर्मूले को याद रखिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m moving with velocity v, moving with velocity v, moving with the velocity v नहीं रहने देते, चेंज करेंगे, इधर लिखिए moving with velocity 6 meter per second as shown. As shown in the figure. If m is very very smaller than capital M, then for one dimensional elastic collision the speed of lighter particle after collision will be, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, स्मॉल m है, इसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड and this is capital M, its velocity is 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका डायग्राम दिया गया है, will be, अब इसके चार आंसर्स हैं, फर्स्ट 2 मीटर पर सेकेंड, इन ओरिजिनल, बहुत मेहनत है, डायरेक्शन, सेकंड आंसर 2 मीटर पर सेकेंड, opposite to original direction, third answer 4 meter per second, opposite to the original direction, fourth option 4 meter per second in original direction. So note down the question, then we will solve it. So if you are done with the question, okay, are we done? ये देखिए अब इसको हम यहाँ बहुत यूज करेंगे, हमें वेलोसिटी पूछी है लाइटर पार्टिकल मतलब v1, देखिए
यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। u1 गिवन है 6, u2 गिवन है 4, m1 गिवन है स्मॉल m, m2 गिवन है कैपिटल M, और v1 का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले v1 का फॉर्मूला भी यूज किया है। आसानी से हम उस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला है हमारे पास m1 माइनस m2, तो इसको अच्छे से लिखेंगे। फॉर्मूला याद रहना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, क्योंकि स्मॉल m कैपिटल M से बहुत छोटा है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट कर देंगे मतलब हमने m1 को क्या ले लिया, m दैट इज 0। ये बचा माइनस कैपिटल M इंटू 6 m1 प्लस m2, यहाँ पे भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे अपॉन m, और ये हो गया 2m इंटू 4 अपॉन m। तो v1 विल बी माइनस 6 प्लस 8, क्योंकि ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो कैंसिल हो जाएगा और v1 की वैल्यू आ जाएगी +2। और कॉमन सेंस की बात है, अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस ले लें और इसको हम माइनस ले लें, तो हम कहेंगे कि स्मॉल m की ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी, 6 थी, पॉजिटिव थी, और कॉलिजन के बाद भी उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या आई, +2 आई। तो हम आंसर टिक कर देंगे ए। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन ऑन इलास्टिक कॉलिजन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। Are we done with this? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक मिनट, एक और हम क्वेश्चन करेंगे। A body of mass m1 moving with a velocity moving with a velocity 3 meter per second collides with another body collides with another body at rest of mass m2. After collision, the velocity
of two bodies are 2 meter per second and 5 meter per second respectively. Along the direction of motion of m1. The ratio m1 upon m2 is 5 by 12. Second option 5:1. Third option 1:5. Fourth option 12 upon 5. तो हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. ये देखिए, सिचुएशन इज लाइक दिस. Velocity 3. This is at rest. Their collision takes place. उसके बाद फर्स्ट का वेलोसिटी 2, सेकंड का वेलोसिटी 5. तो देखिए u1 is 0 और u1 is not 0, u1 is 3. u1 is 3. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. आइडेंटिफाई करिए u1 3, u2 0, v1 2, v2 5. v1 का फॉर्मूला लगा देते हैं. m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus 2m2. बहुत इजी है, फॉर्मूला याद रखिए. अपॉन m1 plus m2. अब देखिए v1 तो गिवन है 2, ये तो मालूम नहीं है. m1 minus m2 अपॉन m1 plus m2. u1 भी गिवन है 3, ये 0 हो गया. तो आप इसको नोट करिए, अगले स्लाइड में जाके सॉल्व होगा. बहुत प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन को 2-3 बार करिए. एक्चुअली क्वेश्चन करने के अलावा आपको समझना पड़ेगा हम उसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं. हाउ वी आर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप नोट कर लीजिए. तो फिर हम अगली स्लाइड पे जाते हैं. हमेशा एक रेफरेंस डायग्राम जरूर हमें बनाना चाहिए. हर हालत में हमें एक रेफरेंस डायग्राम बनाना ही चाहिए. तो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं. 2 equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into 3. तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3m1 minus 3m2 equal to 2m1 plus 2m2. तो इसको इधर ले जाए और इसको इधर ले जाए तो 3m1 minus 2m1 equal to 2m2 plus 3m2. So it is m1 equal to 5m2. m1 upon m2 is 5:1. So correct answer is B, 5:1. Please note it down fast.
ओके, सो वी आर एंडिंग इट, अगली क्लास में मिलते हैं।